We interrupt that story to get you straight to Maneka Gandhi, the new Women and Child Development Minister, speaking to the media. डाली गई थी बहेड़ी में, जिसके मुंह तेजाब से उतारा गया था और उसका भी बलात्कार हुआ था और उस पर I was actually concentrating on that at that point. But सवाल ये है कि हम करें तो क्या करें. फिलहाल अभी तक जो बलात्कार करते हैं या जो औरत की छेड़छाड़ी भी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि औरतें जाएं तो कहाँ जाएं. पुलिस वाले के पास जाए तो पुलिस वाले उनको बहुत तंग करते हैं. ये कभी कभी ये जातिवाद कौम की लड़ाई होती है जो औरत के ऊपर टूट पड़ती है. कभी जब वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर भी उसके पास 20 और केस हैं. औरत के ऊपर कोई खास महत्व नहीं है कि इसी वक्त उनको चेक करना है, इसी वक्त उनकी मदद करना है, तो वो भी घंटे लगते हैं. फिर वकील दे दो तो वकील सालों साल लगाते हैं. इसलिए हमने सोचा है कि ये सब चीज़ों का जो उपाय है वो ये है कि हम एक जगह बनाएंगे. विल कॉल इट बाय अ नाइस नेम बट इट बेसिकली इसको रेप क्राइसिस सेंटर है और उसमें हम लोग एक जगह बना करके उसमें सबसे पहले मेडिकल एड होगा, उसके बाद लीगल एड, पुलिस एड और उसके साथ एक एम्बुलेंस होगी. सब कुछ होगा उसके साथ. उसके लिए पैसे भी रखे गए हैं और ये दिसंबर से पहले ये बन जाएंगे. सरकार जिस तरीके से बीते 72 घंटों के अंदर 6 रेप के केसेस सामने आए हैं. आज बीजेपी के महिला मोर्चा भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अखिलेश सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे. क्या आपको लगता है जिस तरीके से मुलायम सिंह ने पहले बयान दिए थे, क्या आपको लगता है कि सरकार की ये जो एक इनसेंसिटिविटी है वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों के लिए? इनसेंसिटिव तो वो है और लेकिन अगर दूसरी सरकार भी आ जाए, मैं तो कहती हूँ ये सरकार जाए लेकिन दूसरी सरकार भी आ जाए, जब तक हम औरतों को कोई प्रोटेक्शन ना दें और जल्दी ना दें तो दूसरी सरकार भी क्या कर पाएगी. आप पुलिस को सेंसिटाइज करते जाइए. क्या पुलिस को नहीं मालूम है कि ये बुरी चीज़ है? लेकिन फिर भी पुलिस रिएक्शन करती नहीं है. तो वील हैव टू एक्चुअली मेक सेंटर्स लाइक दिस. No, they'll be at district level. You said 500 crores. Will state government operate these? No, it's the whole scheme because we worked it out. The rape crisis centers. No, they'll be given a name. They're still very much, they're just 1.5 weeks old or less than that in the thinking of how to do it. सरकार ने निर्भया फंड की घोषणा की थी. One second, Vijay. Sorry? There's an ନିର୍ଭୟା fund in place. That's right. Corpus, We will be accessing that as well. Yes. We will be accessing that for this. Yes. Ma'am, you've spoken about insensitive cops and doctors not being sensitive enough. Will these crisis centers have specially trained people? Or That's right. Dedicated staffers. you will train them in? Absolutely. And they will all be they will all be computerized. They will all be. I want to know that if a woman, मान लो कि the helpline is 181. I want to know, as everybody does in India, and it will be a transparent process, that if a woman rings up at 181, did they respond or not? So that will come up for review all the time. तो ये ना हो कि बस लटके रहे कि हम फोन करते रहे और फिर कोई आता नहीं है. Will the ministry run these centers or will you transfer the money to state government? No, I haven't thought it through, but I think we will build them. And then we'll see as it goes what's more effective. निर्भया फंड के जब एक इशू हुआ था उसके बाद ही इसी तरह के क्राइसिस सेंटर राष्ट्रीय महिला आयोग बना रही थी जिसमें मध्य प्रदेश और हरियाणा में इम्प्लीमेंट हुआ था. क्या ये उसी तर्ज पे है जिसपे सारे के सारे प्रोटोकॉल्स होंगे कि एक डॉक्टर की क्या ड्यूटी होती है, वन सेंटर है जहाँ पे सब कुछ होगा? हाँ, जिसमें डॉक्टर की क्या ड्यूटी है, पुलिस की क्या ड्यूटी है, वकील की क्या ड्यूटी है. देयर विल बी sensitization of the judiciary so that it doesn't go on for ages and ages. एनसीडब्ल्यू की एक जो रिपोर्ट है उसको हमने बहुत क्लियर कहा है कि जितने मामले हमारे पास आते हैं 50% मामले यूपी से होते हैं और मैक्सिमम में
पुलिस की जो नेग्लिजेंस है, पुलिस की जो गलती वो सामने आती है। जी। तो मैम इस पे आप इस केस में जो कहेंगे, इसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस बहुत ज्यादा जिम्मेदार है? हाँ, पुलिस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। औरत जाती है तो यस, पुलिस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। प्रैक्टिकली सारे इंसिडेंट्स रात को ही होते हैं। That's right. That is the one of the most major concerns. That's right. So the question is, गाँव में कोई टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है। You're absolutely right. It all linked up. In fact, ये सब चीजों को 65 साल लग गए हैं सेटअप करने के लिए। अखिलेश One of the- गवर्नमेंट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किए। यहाँ से उस एरिया से MP MLA होते हैं, वो भी कुछ नहीं करते। तो मैंने- जो रात को तो सबको ही निकलना पड़ता है। जी। और अभी ये सब चीज जो हो रहा है, ये मतलब विक्टिमाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मायावती बोल रहा है, कल उन्होंने बोल रहा है कि जो अखिलेश गवर्नमेंट की टाइम पर ये हुआ और किसी टाइम पर नहीं हुआ। Ji, I agree with you completely. In fact, when I listed my priorities out, virtually on the second day, which one of them was toilets. And we will certainly be coordinating with the health ministry to see that toilets are a priority of this government. Because I agree, any member of parliament, in fact, I'm happy to dedicate all my MP lads to the making of toilets, because that is really important. In my first 10 objectives, this was one of them. Ma'am, Ma'am, 100 days आप जाएंगे क्या? you were aware about the fact that some children from Jharkhand, Bengal is Yes, we discussed that this morning. In fact, the meeting has been going on the whole day about the bringing in of children to Kerala to go to orphanages of a certain religion. And I've asked for a report by tomorrow morning. I'm very, very concerned about it. But you know, it comes out of weird rules. So Kara, which is the adoption agency, will be completely refurbished and new rules will be made. हम आपको बताते हैं कि what is one of the reasons. There are many reasons, but one of the reasons is happening is because जब कोई adoption करना चाहता है, it is adoption agency specific. तो अगर कोई मिस्टर X अडॉप्ट करना चाहता है तो कारा एट रैंडम गिव्स हिम एन एजेंसी एंड सेज खाली आप इस एजेंसी से ले सकते हैं। अब उस एजेंसी में अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर वो एजेंसी इस तरीके की चीज़ें कर सकती है। अब वो एजेंसीज जो इन्वॉल्व है, मैंने मिनिस्ट्री वालों को कहा कि प्लीज़ डी रिकग्नाइज देम, सेंड देम टू जेल इफ यू कैन। लेकिन हमने उसको चेंज करके नाउ वी विल मेक इट चाइल्ड स्पेसिफिक। It's really important to change our entire outlook to see that every child gets a home. And this is open. But Kara, when I was minister last, I actually invented the rules there. And now I'm happy to modernize it so that it does better. trafficking? Sorry? Is it child trafficking? What happened in Kerala? That children have been taken to Kerala from child trafficking? Of course it's child trafficking, but child trafficking doesn't necessarily mean for prostitution. See, आप जो शब्द trafficking इस्तेमाल कर रहे हो, that is you're insinuating prostitution. And I'm saying that when you take a child against his or her will, and you take them far away to do something that they do not want to do, that is trafficking. These are little children. They have been taken to Kerala, and according to the reports that I have read, they have been taken to be admitted to orphanages. That is trafficking, in a way. If you one at a time, I'm going to start from there. One question here, ma'am. With regard to Badaयूं, what are the steps that you've taken with regards to your interaction with the UP government or the UP